एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां पर लगभग 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हर एक 6 महीने में अप्लाई करते हैं और केवल 350 लोगों का ही सिलेक्शन होता है और ये देश का गौरव बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक देश के गौरव से बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक टू चिन्मय ठाकुर, who has become a pride of nation. He has completed 3 years of course in NDA, and now after 1 year, he will be deputed as lieutenant in Indian Army. Let's talk to him. तो चिन्मय, अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताइए। My first 3 years were in NDA, Khadagwasla. That's for all the 3 services. But अब मेरी जो आगे की ट्रेनिंग है, that is called pre-commissioning training. इस ट्रेनिंग के बाद डायरेक्टली ऑफिसर्स बनते हैं, तो वो मेरी होने वाली है एज आई एम एन आर्मी कैडेट देहरादून में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। और मेरे जो काउंटर पार्ट्स हैं एयरफोर्स एंड नेवल कैडेट्स, तो एयरफोर्स वाले जाएंगे हैदराबाद और नेवल कैडेट्स कोची। राइट। और आज मैंने सुबह ही वो परेड देखा, पासिंग आउट परेड, एंड आफ्टर वॉचिंग इट आई फेल्ट प्राइड। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि वो चिन्मय वही है जिसे मैंने 4 साल से देखा है, when you were 4 years old, और now he is becoming lieutenant, the pride of nation. That's just great achievement. Goosebumps moment. Yeah, goosebump, exactly. Goosebump effect बिल्कुल आया था हमें। Now, how did you feel when you found yourself in the parade ground and you found that you are making your dream come true? One single word, daydream. मतलब मैंने for my 7 years the only thing I dreamt of was going to NDA. अब मैं NDA पहुंच गया. I passed out 3 years there and I was passing out. I was in the passing out parade. But still मुझे विश्वास नहीं होता कि हाँ मैं इस मुकाम तक पहुंच चुका हूँ। मतलब अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, just passing out parade happened and I am still can't believe. In the morning. हाँ, in the morning. It is the privilege of the cadets of the passing out course to carry the President's colors. In keeping with this tradition, the cadets carrying the President's colors to the parade ground are Squadron Cadet Captain Pratham Singh, flanked by Cadet Sergeant Major Aman Patel and Cadet Sergeant Major Chinmay Thakur. Ladies and gentlemen, please look ahead. Approaching the parade ground in lightning formation are 3 Sukhoi 30 MKI aircraft. A word about drill. Drill inculcates discipline, which is the bedrock of military Yes, life. I could see the energy, the enthusiasm everybody had, it was excellent. It was really great. Now, why did you choose army? Like first I was towards Air Force when I was a kid, but slowly I realized that I am more into ground things, or we can say natural things. Like I was interested for trekking, camping. मतलब मुझे इस टाइप की चीजें बहुत पसंद थी। फिर मैंने कई सारी मूवीज में बहुत असर पड़ता है आर्म फोर्सेस वालों पे। मतलब हम बोलते हैं एनडीए में कि यू आर अ लक्ष्य कैजुअलिटी, यू आर अ बॉर्डर कैजुअलिटी। इसका मतलब है कि तूने लक्ष्य देखी और तू उससे मोटिवेट होकर एनडीए आ गया। तो अब मेरा क्या था कि जब 2008 26/11 अटैक्स दोज हैपेंड, तो मैंने देखा कि सबका सब ठीक है, बट जब व्हेन द अटैक्स हो गया, आवर स्पेशल फोर्सेस वेंट, एनएसजी वेंट, एंड व्हेन दे वर कमिंग बैक अटैक, मतलब काउंटर अटैक्स करके पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, देन द पीपल ऑफ मुंबई, they were lined up on both sides of the road and they were just saluting them. That was the closest a person can get to be a superhero, and I want to be that person. उसी कारण मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ।
Oh, that's wonderful. That's true. बहुत सारे रोल मॉडल्स हमारे पास आ चुके हैं, राइट? द वे यू मेंशन्ड कुछ मूवीज लाइक लक्ष्य और रंग दे बसंती दैट आई एडमायर अ लॉट. ऐसे बहुत सारे मूवीज समाज में परिवर्तन ला सकते हैं. सो पीपल यूज्ड टू लुक एट दोज मूवीज एंड गेट इंस्पायर्ड and they used to feel like they are the role models. But now the people like you who are the real role model, they are coming into picture. आप एक रोल मॉडल बनने वाले हैं, इनफैक्ट बन चुके हैं. सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? It's really great अगर कोई इससे मोटिवेट होके ज्वाइन करता है, and I would say that NDA is really a good institution to join. So yes, it feels really good. अच्छा, उसके अलावा मुझे ये भी पता चला कि हम भारत के लोग बहुत सारे दूसरे कंट्रीज, दूसरे देशों को भी मदद करते हैं और एनडीए में जगह देते हैं. We call it friendly foreign countries. So in my course, we have got 19 cadets from friendly foreign countries. There are countries like Bhutan and Myanmar, Vietnam. We also had Afghanistan. So from these countries, cadets come and they train with us. So recently I watched one song which is NDA, Cadet Hum NDA ki, some sort of that, you know. So it showed you the journey of NDA student from beginning, from the first year to very next year, you know, and then the final year kind of. So how did you feel when you were transitioning from school to NDA? कैसा लगा जब आप स्कूल छोड़कर NDA में एडमिशन लिए? Yes, it was difficult from school to NDA. Right. But I would like to tell you about my other course mates. मेरा तो फिर भी ठीक था कि हाँ, सैनिक स्कूल, same things, short haircut, discipline, marching and all, and then going to same environment again, same but little bit advanced environment. But there were my course mates who were right out of the CV street. We call it the CV street, the public school types. तो उनका क्या हुआ कि they did not know anything. वो सीधा यहाँ पहुंचे, अच्छा हेयर कट भी होता है. फिर देयर आर सीनियर्स, उनको लगा कि हाँ जैज टाइप सीनियर्स होते होंगे, नॉर्मल जो मतलब चिल टाइप रहेंगे. बट रीचिंग देयर दे गॉट टू नो दैट नो, यहाँ ऐसे सीनियर्स होते हैं. यू हैव टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट एंड दे विल समटाइम्स गिव यू पनिशमेंट्स एंड गिव यू ऑर्डर्स एंड यू हैव टू फॉलो इट. सो उनके लिए अलग ही वो था एनवायरमेंट. सो फॉर देम फर्स्ट टर्म वाज लिटिल हार्ड, बट टुगेदर व्हेन द कोर्समेट्स आर अराउंड यू कैन डू एनीथिंग. सो हम साथ साथ सब कुछ निकाल लिए. हम सीनियर्स के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं जो लाइफ टाइम के लिए चलता है. डिड यू मेक एनी बॉन्ड दैट यू कैन थिंक ऑफ कि यार ये सीनियर हैं जिन्होंने लाइक यू नो आई हैव अ बॉन्ड विथ हिम फॉर लाइफ टाइम? आई वुड से एवरी सीनियर. मतलब इन माय स्कॉन एवरी सीनियर आई नो, आई हैव दैट बॉन्ड दैट एनी डे एनी टाइम आई नीड एनी हेल्प आई कैन कॉल हिम and he will surely help me back wherever he may be. There was one story that what happened in our fourth term when I was in my fourth semester. One of my course mates was financially little bit weak, so means his family was in a loan, but they were not able to pay. So we got to know our SCON in NDA. So we all collected money. And after knowing that we are collecting money, those who were there in NDA, our seniors who were already commissioned, they also sent some money. Wow. And we paid his loan and also arranged some money so that he can, you know, live well. His family can live well. He still doesn't know that we helped him. He just knows that somehow his family got money and that's it. That's the real kindness. I admire, I appreciate a lot. Great. कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं चिन्मय जो एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं और दे वांट टू बिकम लाइक यू नो, यू आर द रोल मॉडल एंड दे आर लुकिंग अप टू यू एंड दे वांट टू बिकम एनडीए कैडेट. सो हाउ कैन दे बिकम? जो 10th और 12th में भी पढ़ रहे हैं, इफ दे वांट टू जॉइन एनडीए, इट्स अ वेरी ग्रेट इंस्टीट्यूशन एज आई सेड अर्लियर आल्सो. सो यू कैन प्रिपेयर मैथ्स टाइप्स. इट रिक्वायर्स अ बेसिक सिलेबस ऑफ मैथ्स. मतलब if you see, the exam is not that much hard, conducted by UPSC. Written exam is there. One paper is of maths, other of GAT. Basic things are asked. You have to clear the maths paper, then your GAT general ability paper is checked. After you clear your written exams, there's one interview. And the major factor which makes the ND exam hard is the interview. Many will clear the written exams. You will know that you will clear the written exam. There are people like that.
but the interview you cannot say anything. You just have to be truthful with yourself because it's a 5-day interview. तो वहाँ क्या होता है, 3 चीजें देखी जाती है. एक आपकी साइकोलॉजी, सेकंड होता है आपका ग्रुप फैक्टर, ग्रुप टास्क बोलते हैं जिसे, और थर्ड आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है कि आप पर्सनली कैसे हैं. तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आपकी टोटल पर्सनैलिटी डिसाइड की जाती है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, एंड देन द बोर्ड 3 ऑफिसर्स सिट एंड दे डिसाइड इफ दे वांट टू रिकमेंड यू और नॉट. अगर उन तीनों में से एक भी नो बोलता है देन इट्स अ नो, यू विल नॉट ज्वाइन. अगर तीनों हाँ बोलते हैं देन इट्स. वो साइकोलॉजी में क्या चेक करते हैं? व्हाट डू दे रियली चेक एंड वांट टू नो? साइकोलॉजी, आपने जैसे कैप्टन अमेरिका देखी होगी, तो कैप्टन अमेरिका में जो मेजर चीज शुरू में दिखाई जाती है जब कैप्टन अमेरिका बनाते रहते हैं कि द सीरम और वट एवर दे यूज टू मेक हिम दैट सुपर पावरफुल कैन मेक अ गुड मोर गुड, बट एट द सेम टाइम एविल मोर एविल. सो दैट इज व्हाट इज देयर. मतलब आपको एक अच्छा आदमी चाहिए तो आप उसको बहुत अच्छा आदमी बना दोगे, बट अगर वहीं बुरा आदमी आ गया तो कुछ और भी हो सकता है. सो दे नीड अ पर्सन हु इज ट्रुथफुल, ऑनेस्ट. मतलब honesty is the biggest thing in NDA. Even in NDA ना, we say that युधिष्ठिर तक ने झूठ बोल दिया था, बट NDA कैडेट कभी झूठ नहीं बोलेगा. ओके, सो ग्रुप टास्क में क्या देखा जाता है? वहां पर लीडरशिप कैपेबिलिटीज देखते हैं या फिर टीम वर्क? टीम वर्क एंड लीडरशिप बोथ. मतलब you should be able to be a part of a team, but at the same time if you are required to lead a team you should be able to do that also, and both are interconnected. You cannot be a good leader if you're not a good team member. So both are looked upon. All right, so now how about personal interviews? How was that? Personal interview, lots of things like your knowledge, but knowledge is the most minor thing they look. Otherwise, they look at your skills of handling pressure. They may ask rapid fire questions and all that, or they may ask some trick questions. That will also do. Okay, so group discussion में क्या topic था? What was your topic on group discussion? My topic was something related to feminism. Okay. मतलब अच्छे से याद नहीं है, but something related to feminism कि women should be allowed reservation, women reservation. It was regarding women reservation. Yeah, but things are changing these days in society. अब हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं. We don't talk about women reservation, but we rather talk about women empowerment. That has happened in NDA as well. So NDA ने अभी लड़कियों को भी, महिलाओं को भी अलाउ किया है NDA में शामिल होने के लिए. So what is your opinion on it? It's a very great approach that females are allowed in NDA, because if we see other countries, Israel, US, women are already there in every field. Fighter pilots are there. Even in our country, fighter pilots have been started. Fighter pilot course has been started for women. We have got our first fighter pilots. So why not Army? And why not NDA? NDA is the most premier institution for our defense forces. So it's a really great approach. And I would like to share a fact that this time when exams for 148 course was conducted, and female candidates were also allowed. So out of the merit list, in the top 10 ranks of the merit list, 9 were female candidates. 10 में से 9. हाँ, 9 लड़कियां थी. Great. ओके, सो चिन्मय जितनी बात की उसे ये पता चल रहा है कि एनडीए में जाने के लिए आपको फिजिकली एंड मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, राइट? सो ऐसा कोई स्टूडेंट था क्या जो एडमिशन लेने के बाद ही couldn't really bear the environment, you know, and the kind of physical rigor that NDA had? So ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ जिसमें स्टूडेंट गिव अप? कोई ट्रॉमा में गया क्या? ट्रॉमा में तो वहां के सीनियर्स नहीं जाने देते. They will roger you, they will take you, they will give you punishments. But होता क्या है कि अगर वो देख ले कि हाँ इससे इस लेवल के ऊपर नहीं हो पा रहा, they know कि कहाँ तक वो जा सकता है, so they will take care कि हाँ इसको अब कुछ दिन के लिए रोक देते हैं. या फिर जनरली जो ट्रॉमा में जाते हैं, मतलब नॉट ट्रॉमा बट जो विदड्रॉ करते हैं कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग नहीं करनी, वो रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ दिस इज नॉट फॉर मी, मैं मतलब कुछ और करना चाहता था, यहाँ ऐसे ही आ गया. कुछ रहते हैं जो पीयर प्रेशर में आ जाते हैं या फिर पेरेंटल प्रेशर में, तो वो बाद में सोच लेते हैं कि हाँ दिस इज नॉट माई जॉब, एंड दैट्स फाइन बिकॉज हर कोई ये जॉब नहीं कर सकता. देयर आर ऑल्सो अदर वेज टू शो योर पैशन फॉर योर कंट्री. कोई IAS ऑफिसर बन जाता है, बिजनेस, एवरीथिंग इज देयर.
जो भी करो बेस्ट करो। मतलब जब तक आप एक एक काम एक एक बंदा अपने दिल से करे ना, तब जाके देश का कुछ हो सकता है। इट्स नॉट ओनली आर्मी और सम अदर फोर्स। तो बस देश के लिए करना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। डू एनीथिंग दैट यू वांट, बट जस्ट मेक श्योर यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द नेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, did you face any challenge in terms of physically or mentally when you thought that यार ये बहुत हो गया? यू विल नॉट रियलाइज इट व्हेन यू गो थ्रू इट। मतलब होगा क्या, आप कुछ कर रहे हो। हमारे पास कैंप्स होते हैं कि हम एंड्योरेंस मार्च करते हैं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर्स, तो हम करके आ जाते हैं। ओके, उस टाइम हमें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि हम कोर्समेट्स की हेल्प करते रहते हैं, कोर्समेट से हेल्प लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम बिजी रहते हैं। सो आप मेंटली फिजिकली अपने आप को पुश करते जा रहे हो, आप कर लिए, आप आ गए। फिर उसके बाद आप बैठे हो अपने कोर्समेट के साथ ऐसे ही कुछ बातें कर रहे हो, तब आपको रियलाइज होता है कि आपने ये भी कर लिया। लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने अपना मेंटल बैरियर पुश कर दिया। एनडीए आपको पता नहीं चलने देगी, बट आपका बैरियर पुश हो जाएगा अपने आप। अच्छा, ऐसे कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? इज देयर एनी रिसोर्स और बुक दैट यू वुड लाइक टू रेकमेंड, और कोई फिजिकल एक्सरसाइज स्पेसिफिक, एनी एज सच? Work hard. There's no substitute for hard work. And you know the basic things, you can find it like the good books. Pathfinder is there. Study for maths clear करो आप अपना. Then GAT is there. Study basic general knowledge. वो हो जाए. Know yourself. The basic thing for SSB is you should know yourself. How do you do what you do, then why you do it. That's very important. उसके बाद maintain basic physique. It's not that it is checked in your exam, but after coming to NDA, it's required कि आपका physique ठीक हो. So maintain your physique. मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एनडीए में जा सकूं, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूं और आई माइट नॉट बी एबल टू कॉम्पीट विद द स्टूडेंट्स हु स्पीक रियली वेल इंग्लिश। सो उनके लिए क्या सजेशन है जो हिंदी मीडियम से हैं और दे वांट टू बिकम कैडेट इन एनडीए? एक एग्जाम्पल है, बहुत पुरानी बात है, मतलब 125th कोर्स, आई एम फ्रॉम 142 कोर्स, ये बात 125 कोर्स के टाइम की होगी। एक ऐसा कैडेट था जिसने एसएसबी के टाइम सारी चीज़ें हिंदी में की और उसका भी सिलेक्शन हो गया था। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इंग्लिश में ही बात करें, और अगर आपको सीखना है इंग्लिश तो आप सीख भी सकते हैं। This piece of advice is going to help the students, especially Hindi medium students like me. So ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के जो कुछ करना चाहते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन इंग्लिश की वजह से वो अपने आप को रोक कर रखे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन डू इट। और सभी से जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को इतना फैलाएं ताकि हर एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के पास ये पहुंचे और वो उनकी महत्वाकांक्षाओं को और भी ऊपर लेकर जाए। सो चिन्मय, एक लास्ट क्वेश्चन, What is your next dream? अब अगला सपना क्या है आपका? Next dream, I could say that I want to just be a good officer. That's it. मतलब to be an idol to my soldiers. आपको पता है इंडियन सोल्जर्स ना दुनिया के बेस्ट सोल्जर्स हैं। मतलब आप जैसे भी हो, आपकी वो रिस्पेक्ट करेंगे, आप जो बोल दोगे वो करेंगे, और वेरी डिसिप्लिन लॉट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। दे विल कंसिडर यू गॉड। तो अब अगर आपके पास ऐसे सोल्जर्स हैं तो आपको उनके लेवल तक पहुंचना होगा कि मतलब हाँ, अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी उनके लिए उतना ही कुछ करना है। सो आई जस्ट वांट टू बी अ गुड ऑफिसर. So Chinmay, thanks a lot for joining in. It was wonderful discussion. I'm sure the people who are watching it will be inspired by your thoughts, your comments, your beautiful personality altogether. So thanks a lot for coming, and we have one small token of appreciation for you. Thanks.